Good afternoon, students. This video is to explain second example of the formal invitation. This example is related to the formal invitations that is written for institutes. The question that we will answer, on the basis of which I'll explain this type of invitation, is write a formal invitation for your school's annual crumb prize distribution function. Such questions can be the opening ceremony of some branch office as well, just as this is the question of school's annual crumb prize distribution function. We shall be using the same format as I explained to you yesterday, and there are certain variations to this question. For example, in that question, the name of host was given. Here, we will be giving the designation of the host, not the name of the host. Just as I have written, so you can imagine that the host for the school will be management, principal, staff, and students. So I have written the designations of the host, management, principal, staff, and students of Bharatiya Vidya Mandir, Kichlu Nagar, Ludhiana. Here will come the name of institute to which these people belong. Clear? So, and then we will proceed further like the as in the same manner we did yesterday. Management, principal, staff, and students of Bharatiya Vidya Mandir, Kichlu Nagar, Ludhiana cordially invite you all. So again we are using the same customary line of invitation जैसे कि हमने कल यूज़ की थी, that request your benign presence यहाँ पे हमने यूज़ की है cordially invite you all. So इस तरह की कोई भी लाइन जिससे कि आप invite करोगे वो लिखनी है आपने होस्ट के नाम के बाद. ऑन द ओकेजन ऑफ, जैसे कि आपने कल वाले एग्जाम्पल में दिया था, ओकेजन मेंशन किया है 56th एनुअल कम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे. Right? Similarly, date, venue, time is described over here in the school premises on this date at this time. Clear? So same format and same layout is being used with certain variations. Then again comes the next variation in this type of invitation. Here we write down the name of chief guest और जज. अगर कोई कंपटीशन है तो जज का नाम आएगा यहाँ पे, या कोई स्पेशल गेस्ट बुलाया है उसका नाम आएगा विद डेजिग्नेशन कि वो स्पेशल गेस्ट कौन है इस फंक्शन का और उसका डेजिग्नेशन क्या है. सो इस तरह से आपने डेट, वेन्यू और टाइम के बाद ये वाला पोर्शन ऐड करना है. श्री विजय इंदर सिंगला, एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब. राइट? सो इस तरह से किसी भी चीफ गेस्ट का या किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का आप नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो विद डेजिग्नेशन. फिर उसके बाद यू विल हैव टू ऐड सच काइंड ऑफ लाइन दैट मिस्टर सो एंड सो या श्री सो एंड सो, जो कि ये है जो उसका डेजिग्नेशन ये एक्सप्लेन किया है, हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू ग्रेस द ओकेजन एज चीफ गेस्ट हो, स्पेशल गेस्ट हो या जज हो, यहाँ पे आपने मेंशन करना है. क्लियर? देन we will be mentioning some special note or special instruction that can be of such kind of function. For example, here I have written note, mobile phones not allowed, entry only with card. Right? Again we shall be using the same complementary clause as we used in yesterday's question. RSVP, principal. Here we shall be writing only one designation, principal, Bharati Vidya Mandir. Again name and address of the institute will be there.